अच्छा जी, welcome back guys. अब हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 15. बट बिफोर स्टार्टिंग, these past papers will be available at 16th August. और हर पास पेपर के फ्रंट पेज पे देयर विल बी अ हर चैप्टर के फ्रंट पेज पे देयर विल बी अ बारकोड जो आप स्कैन कर सकते हो। और वो जब आप स्कैन करोगे वो आपको एक लिंक पे ले आएगा विच विल बी माय यूट्यूब चैनल। और वो यूट्यूब चैनल पे आप वीडियोस देख सकते हो रिलेटेड टू मी मेकिंग वीडियोस ऑन passive quiz। और उन passive quiz में जो important questions हो गए, important as in repeated questions, और जो questions इतने well explained नहीं होते usually, वो होंगे। And there will be a couple of notes, the very crucial ones in containing in that past papers, or it will be very helpful. And you can also go follow me on Instagram, which is inscribe1. So having said that, question 11, which description of a black surface is correct? Black surface, अच्छा जी. Black surface is a poor reflector. White surface is a good reflector. White surface पे अगर कोई चीज आए, it will reflect, while on the other hand, अगर कोई black surface पे आए, it will get absorbed. ठीक है ना? Then good absorber. That is a sign of being a black surface and a good emitter. Good emitter meaning it emits heat, like a good heat emitter. So C is the right answer. Question 11, C is the right answer. Question 12. Four metal containers with identical dimensions are filled with water at 90 degrees Celsius. All the faces except one of each container are covered in a very good insulator. The one exposed face on each container is painted either black or white. In which container does the water cool fastest? Water will cool faster in the container जिसकी जो surface area है ना, the area which is the largest, because it will have more space to emit the heat. First, the surface area must be the largest. मतलब छोटी side वाला नहीं होगा, the small face painted with white, the small face painted with black will not be a viable option. It's either A or B. अच्छा, और फिर व्हाइट और ब्लैक में कंपैरिजन हो जाएगा। जो व्हाइट होता है ना, इट्स अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर, while black is a very good absorber, and a good absorber means a good emitter. Emitter, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, emitter means it is good at emitting energy, मतलब हीट को रेडिएट करने में बड़ा इजियर होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैं दूं, फॉर एग्जांपल आपने कोई डार्क कपड़ा बाहर रखा हुआ है, एंड इफ यू पुट योर हैंड नियर इट, यू कैन, अगर थोड़ी देर बाद उसको अंदर ही लेके आए, अगर एक ब्लैक कपड़ा है या कोई डार्क कलर का कपड़ा है, एंड इफ इट्स इन द सन फॉर अ व्हाइल और उसको अंदर अंदर लेके आए, इट विल बी रेडिएटिंग heat. It will be radiating a lot of heat. That means a dark surface, a black surface, and a larger face. Question 13. The diagram shows a glass tube filled with water and suspended above a bench. The water is free to circulate around the tube. The water is circulating in this manner, which is a clockwise manner, right? Water यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, and then back to here. At point P, there is a convection current moving in a downwards direction, at which point is the tube heated to cause the convectional current. अगर सारी options को हम लोग survey कर लेते हैं, for example अगर C पे होगा, when the water is heated the density is lowered. जब water heat होता है density reduces, so the density will reduce, और जो less dense और fluid होता है ना, it moves to the surface. तो अगर यहाँ से ही होना शुरू हो जाए तो इट विल स्टार्ट टू क्लॉग अप, और वो ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा, while the flow of water is in the downwards direction. So this C is not a viable answer. Same goes with D. A देख लेते हैं. A is an interesting one. For example, A के नीचे एक कैंडल लगी हुई है, right? A के नीचे एक कैंडल लगी हुई है. A के नीचे कैंडल लगी हुई है और वो कैंडल वाटर को हीट अप कर रही है. तो वाटर हीट्स अप एंड इट गोज अप, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ.
of oil and water. For example, this is oil and this is water. Whenever you add oil in water, the oil always comes at the surface, right? अगर आपने किसी मतलब पानी में तेल डाला हो, तेल ऊपर आ जाता है. That's because तेल की डेंसिटी कम है. तेल की डेंसिटी बहुत तेल की डेंसिटी कंपैरेटिवली टू वाटर इज लेस. दैट्स व्हाई इट कम्स अप. इन कॉन्ट्रास्ट, जो वाटर की डेंसिटी, जो हॉट वाटर की डेंसिटी होती है, दैट इज कंपैरेटिवली लेस एंड इट विल मूव अपवर्ड्स, विच इज व्हाट वी वांट, राइट? क्योंकि इसने अपवर्ड्स जाना है. वी नीड टू कंप्लीट अ रोटेशन. And the water which is heating up, which has less density, it will go upwards. So that is the right answer. I hopefully you understood that. Question 14. A glass beaker contains water in the warm room. The water is initially at same temperature as the room. What which change does not affect the initial rate of evaporation? Rate of evaporation. कौन सी चीज change नहीं करती? Change of evaporation depends on three things. Larger surface area, टेम्परेचर हाई होना चाहिए एंड देयर नीड्स टू बी एयर. ठीक है ना? लेट्स सी कि कौन सी चीजें उसके अलावा है. द चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर. अगर टेम्परेचर लोअर करेंगे तो evaporation will reduce और टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो evaporation will increase. That means this will affect the rate in evaporation. B, using a beaker made of thicker glass. Using a beaker made of thicker glass will not affect any sort of evaporation because that is not what evaporation is dependent on. Evaporation is dependent on the three things which I just told you, and the three things are mainly in the O levels course. So B will be the answer. We'll still check out C and D. Using a beaker with a larger cross-sectional area. Cross-sectional area means it will have a larger area to evaporate. जब आप बाहर जाते हो and there is a puddle, छोटा सा puddle होता है और अगले दिन आप वापस वहीं जाते हो, the puddle is gone. और अगर आप उस पडल की वो कम कर दो, फॉर एग्जांपल एक पडल की आप यू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो द पडल विल टेक मच लॉन्गर टू evaporate बिकॉज जो जिस सरफेस एरिया पे वो evaporate हो रहा था दैट हैज रिड्यूस्ड. और जो क्योंकि सरफेस एरिया evaporation मोस्टली हैपेंस ऑन द सरफेस. ठीक है ना? evaporation मोस्टली टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस. दैट्स व्हाई. So D, using a fan to blow air over the beaker, this will also affect because evaporation के ऊपर जो हो रहे होते particles, it pushes them off, right? So that B is the right answer. Question 15. When a piece of smoldering rope is held at the opening of the box in a diagram, smoke moves in the direction indicated. What is responsible for the movement of the smoke? This is very easy question. जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड और गैस, दे आर सब्जेक्टेड टू कन्वेक्शन rather than what do you call it, conduction or radiation. This is a very simple question. So that's it for this video. I hope you enjoyed. Thank you for watching. Allah Hafiz.